Good morning, student. Today I am going to deliver our next topic is a crystalline lattice. You have already studied about crystalline arrangement. Their arrangement is a regular and fixed shape and size formations. Okay, and their particles is closely attached to each other. So let's talk about crystalline lattice. So let's see, a regular three-dimensional arrangements of points in space is called a crystalline lattice. It means to say क्या है, जो crystalline lattice होती है उनके क्या होते हैं, they are regulars and three-dimensional arrangements. ओके एंड इनमें क्या होती है, पॉइंट्स प्रेजेंट्स होते हैं एंड पॉइंट्स के बिटवीन्स क्या होते हैं, सम अमाउंट्स ऑफ स्पेस प्रेजेंट्स होते हैं एंड इनकी क्या होती है, एक रेगुलर फिक्स्ड थ्री डायमेंशियल अरेंजमेंट्स. ओके एंड देयर पार्टिकल्स 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशियल लैटिक्स. ओके क्या होते हैं, इनकी 14 थ्री डायमेंशियल्स क्या होती है, लैटिक्स प्रेजेंट्स होती हैं एंड that's why this condition is called a Bravais lattice. And Bravais it means to say, ये क्या है, एक फ्रेंच के मैथमेटिशियंस है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे क्या है, क्रिस्टलाइन लैटिक्स की डिस्कवरी की. सो दैट्स वाई इनका नेम क्या हुआ, ब्रावीज लैटिक्स. ओके एंड लेट्स टॉक अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, so first character, each point in a lattice is called a lattice point. It means to say क्या है, lattice जो arrangements होती है, it means to say crystalline lattice में जो arrangements होती है उन पे points presents होते हैं. Okay, and this point is called a lattice points or lattice site. Okay, and their particles are each points in a crystalline lattice represented a constituent particles. It means to say क्या है, जो सारे points होते हैं वो क्या होते हैं, एक particulars पार्टिकल्स के फॉर्म पे होते हैं. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो फिक्स्ड एंड रेगुलर शेप्स में अरेंज होते हैं. सो इनके पार्टिकल्स जो है वो एटम्स के फॉर्म पे भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं. ओके सो देयर अरेंजमेंट इज अ रेगुलर एंड थ्री डायमेंशियल्स एंड ये क्या होते हैं, आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं. ओके सो अवर नेक्स्ट इज लैटिक्स पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द जियोमेट्रिकल्स ऑफ द लैटिक्स. इट मीन्स टू से क्या है, इनके जो लैटिक्स पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, डिफरेंट लैटिक्स पॉइंट्स आर जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके सो इन पे क्या होते हैं, जो लैटिक्स के पॉइंट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर जॉइंट्स टुगेदर. ओके एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द जियोमेट्रिकल्स ऑफ द लैटिक्स. इट मीन्स टू से इस क्या है, कंडीशंस को, इस टाइप्स के अरेंजमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल्स लैटिक्स. Okay, now we will discuss our next topic is a unit cell. So unit cell is a crystalline arrangements of particles. Crystalline lattice जो होती है उनकी क्या होती है, different arrangements of particles होती है. So their particle is a joints together. It means to say क्या है, crystalline lattice में क्या होती है, unit cells जो होती है वो particular arrangements में क्या होती है, smallest unit of cells जो है वो एक दूसरे से क्या होती है, joints together. Okay, so let's see, unit cells is the smallest portion of a crystalline lattice. It means to say क्या है, क्रिस्टलाइन लैटिक्स की क्या होती है, स्मॉलेस्ट पोर्शंस होती है. ओके एंड विच व्हेन रिपीटेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इट मीन्स टू से क्या होती है, जो उनकी अरेंजमेंट्स होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट्स होके क्या है वो क्रिस्टलाइन लैटिक्स की फॉर्मेशंस करती हैं. ओके एंड जनरेट अ एंटायर लैटिक्स. इट मीन्स टू से क्रिस्टलाइन लैटिक्स का फॉर्मेशंस करती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर अरेंजमेंट्स. ओके सो let's talk about their characteristics. Show a unit of characterized by 6 parameters. It means to say क्या होती है, means जो unit cells होती है उन पे क्या होती है, एक straight lines के थ्रू attached होती है. So that line is called a edge. Okay, so in this condition let's see, यहाँ पे जैसे कि क्या है, ये crystalline solids में क्या है, किसी भी क्या है particular cubes की edge है. Okay, so in this condition यहाँ पे क्या है, ये इनके मीन्स क्या है, पार्टिकल्स हैं. ओके एंड इन दैट कंडीशन क्या होती है, वहां पे ए बी एंड सी से अपन क्या है, इसको डिनोट्स करते हैं. एंड देयर एक्सिस इज कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा.
ओके, सो इन दिस कंडीशन अपन क्या है इसे डिनोट्स करते हैं देयर अकॉर्डिंग टू देयर एजेस. ओके, एंड ये जो इनके एजेस है वो क्या है मीन्स सिमिलर हो, कोई नेसेसरी नहीं है. सारे 90 डिग्रीज की वैल्यूज शो करे, कोई नेसेसरी नहीं होती है. ओके, सो इन दिस कंडीशन इनमें क्या होती है दे अकॉर्डिंग टू देयर एज दे आर आइडेंटिफाई. ओके, सो यूनिट cells characterized are two parts. Okay, so first is a primitive unit cells and second is a centered unit cell. So primitive unit cells it means to say क्या होंगी, वो क्या होंगी, कोन्स में क्या है इनके मीन्स कॉर्नर कॉर्नर पे क्या होती है सेल्स प्रेजेंट होती है. इट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे इनकी क्या है ये कॉर्नर्स पे क्या होंगे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ primitive unit cells. And what about centered unit cell? So centered it means to say name से identify हो रहा है कि centers में present होगा. Okay, and they are again divided further divided into a three parts. First is a body centered, second is a face centered, third is a in centered. So our first is a body centered. Body centered it means to say क्या होगा body के centered parts में क्या होगा unit cells present होगा. Okay, and what about face centered? Face centered it means to say क्या होगा इनके face के centered में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे साइड के क्या है सेंटर्स में क्या होंगे इनके फेजेस डिफरेंट फेजेस के सेंटर्स में क्या होंगे यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, एंड अवर नेक्स्ट इज इन सेंटर्ड. इन सेंटर्ड इट मीन्स टू से क्या होगा मीन्स बॉडी का जो लेफ्ट राइट होता है लेफ्ट टॉप टॉप हुआ टॉप बॉटम्स हुआ लेफ्ट राइट हुआ. इट मीन्स टू से क्या है इनके इन दिस वे यहाँ पे क्या होगा इन सेंटर्ड कंडीशन इट मीन्स टू से इन दिस फॉर्म क्या होंगे आपके सेल्स जो है वो क्या होंगे अटैच्ड होंगे. इट मीन्स टू से इनके पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे क्या होंगे प्रेजेंट होंगे. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इन सेंटर्ड unit cells. Okay, now we will discuss our next topic is primitive unit cells. So they are divided into 7 different parts. You have already studied about unit cells. So unit cells they are categorized into a two part. First is a primitive cells and second is a center cell. So center cells divided into a three parts and our primitive cells divided into a 7 different parts. So according to various mathematicians they are discovered in a different crystals lattice. So let's talk about primitive cells. So first their types is a cubics, second is a tetragonals, third is a orthorhombics, fourth is a hexagonals, and fifth is a rhombohedrals, and sixth is a monoclinics, and our last 7 is a triclinics unit cell. So let's talk about one by one their characteristics. So according to their characteristics on the basis of A, B, C and alpha, beta and gamma and their different variation. Okay, so let's see our previous lattice tables. So our first crystal is a cubics and their variation is a primitive shapes. It means to say simple cubic shapes, and second is a body central shapes, and third is a face centered shapes. Okay, and their axial distance edge of length is A is equals to B is equals to C, and their angle is alpha is equals to beta is equals to gamma and 90 degree angles. Okay, and our second is tetragonous crystals. So their variation is primitive variations. It means to say simple tetragonal shapes and body centered shapes. Okay, and their edges length is A is equals to B is not equals to C, and their angle is alpha is equals to beta is equals to gamma 90 degree angle. Okay, and our third is orthorhombics crystals. So they are primitive shapes, body centered shapes, face centered shapes, in centered shapes. Okay, they are 4 variations here. Okay, and their edges length is A is not equals to B is not equals to C. It means to say इनमें क्या होती है एंगल्स जो है वो सिमिलर्स नहीं होती है, डिफरेंट एंगल्स होती हैं. ओके, एंड देयर एंगल्स इज इनके क्या है एजेस जो है मीन्स लेंथ जो है वो डिफरेंस होती है. इट मीन्स टू से सिमिलैरिटीज नहीं होती है. ओके, एंड देयर एंगल इज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा एंड 90 डिग्री एंगल्स. आवर फोर्थ hexagonals
crystals. So they are primitive shapes, single shapes होती है इनमें. Okay, and their length is a is equals to b is not equals to c, and their angle is alpha and beta are a 90-degree angles, but our gamma is a 120-degree angles. Okay, and our fifth number is a rhombohedrals or trigonal shapes. Okay, so they are primitive shapes. It means to say क्या होती है, ये only simple rhombohedrals होती है, and their edges length is a is equals to b is equals to c, and their angle is alpha is equals to beta is equals to gamma, but their angle is not a 90 degree. Okay, इनकी जो angles होती है वो तो equals होती है, but their degree जो है वो क्या होती है, 90 degrees नहीं होती है. Okay, and our sixth number is monoclinics crystals. So they are primitive shapes. It means to say simple monoclinic shapes and end centered shapes. Okay, and their lengths is a is not equals to b is not equals to c. It means to say इन पे क्या है, different age की difference क्या होती है, lengths होती है, and their angle alpha is equals to gamma 90-degree angles, but beta but according to beta is not equals to 90 degree. ओके, ये क्या है, बीटा जो है वो इक्वल्स नहीं होती है 90 डिग्री एंगल्स के, बट इनके अल्फा एंड जो गामा है वो क्या होती है, इज इक्वल्स होती है 90 डिग्री. इट मीन्स टू से अल्फा एंड गामा जो है वो क्या है 90 डिग्री पे होते हैं, एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, एंड अवर लास्ट इज ट्राइक्लिनिक. सो ट्राइक्लिनिक इज वेरिएशन primitive shapes. It means simple triclinic shapes, and their edges length a is not equals to b is not equals to c. It means to say इनके edges की length जो होती है वो different होती है, and their angle is alpha is not equals to beta is not equals to gamma. It means to say इनके angles जो है वो similar नहीं होते हैं, but their degree is 90 degree. Okay, 90 degree. Okay, so in these conditions our 14 Bravier's lattice are here. Just count their number. Our cubics present in a 3 variation: primitive, body centered, face centered. Okay, and our trigonal present in a 2 variation: primitives and body centered. So total number of variation is 5. Okay, and our third is orthorhombics, and their variation is 4: primitive, body centered, face centered, and in centered. So total number of variation is 9, and our next hexagonal single primitive shape. So our variation is 10. Then 5 rhombohedrals single variation 11, and our monoclinic variations. So our total number of 13, and our last triclinics present in a single variation. So total number of variation is 14 barrier lattice. Okay, so I hope clear all of you in this topic.